it is always a challenge to portray historical figures on the big screen. And since you're making your comeback after so many years, so tell us about the kind of preparations you'll be doing for the role of Sarojini Naidu in the biopic. Like preparation, I have to first put some 10, 12 kgs weight. I have Hmm. to put on weight for Okay. the character. Yeah, because the Sarojini ji totally looks totally different. So I have to put on weight for that. That's one big preparation I have to do. And Hmm. the second preparation is the way of the modulation, the way she talks, her speeches. Is if you have seen any of Hmm. her video clippings, she even normal talking is also for her is like a poetry. She puts the words in a poetry form and Hmm. very Yeah. fast, and her walking style is very fast. So these are the few which the director has pointed out to me, so which I'm trying to inculcate within me. So these are the things which I'll be following, and the dress, the costumes and the styling and all is totally up to the director how he is going to wrap the whole thing. Yeah. Hmm. Okay. So was it challenging to put on weight? Like, did it take a toll, like नो अभी तक तो मैंने physically पुट or? ऑन किया नहीं है, पुट ऑन करना है मुझे, अभी शेड्यूल जब बन जाएगा, शुरू हो जाएगा, तभी पुट ऑन कर दूंगी. सो आप मुझे मस्त अपना अभी जो देख रहे हैं उसमें और 10-15 किलो ऐड करके आप देखेंगे मुझे जब भी नेक्स्ट इंटरव्यू होगा अपना. अच्छा, अच्छा. Yes, and we have little bit of the makeup also, the portrait makeup for the look and all, for the little wrinkles and all, Hmm. we'll be following that also. It's been almost nearly 3 decades since we saw you on the big screen. So what took you so long? Like, it's been a very long time. Oh, it took me so long. Yeah, that's a nice, sweet question. Yes. I've not taken so long. बीच में मैंने माता की चौकी भी किया था. 2016 से 2000, yeah, 2012, 5 years I have done. Sorry, 2008 से 2012 तक मैंने किया था, वो भी किया था बीच में. Yeah, film, if you see on big screen, yeah, बहुत साल के बाद मैं आ रही हूँ अभी ओटीटी के साथ. वैसा कुछ हुआ नहीं है, थोड़ा फैमिली इश्यूज के वजह से मुझे एक सब बैक लेना था. एज ऑलरेडी द मीडिया नोज अबाउट दैट, इट्स अबाउट वेयर आई लॉस्ट माय हस्बैंड एंड देन आई हैड टू Hmm. बॉयज, सो उनका परवरिश के लिए थोड़ा सा मुझे टाइम निकालना पड़ा था इसके लिए. Hmm. यस, So दैट इज द रीजन. you were already a popular name in the South, before you made your Hindi debut, and you made your debut at a very tender age of, I think, 19. You're 19 at that time. In the Tamil, Yeah, yeah, in the Tamil. yeah, I was Yeah, 19. Yes. yeah, 19, and I think within a span of 3-4 years, I think you've done something like 30 to 40 films. Yeah. Yeah. So how did that happen? Like, would you like How to did take that us back? happen? It can happen now also. There's nothing difficult in that. Yeah. Absolutely, it nothing. जैसे जैसे pictures आते गए और मैं Hmm. करते गई, बस that's all. I was totally into it. I truly believe in whatever I do to give my 1000%. That is the one thing, the dedication which I have in me. So my concentration, just एक picture हो गया, discipline, and finishing one picture. Then the opportunities went on coming, and I just took on the opportunities and beautiful characters. जिसी को भी मना नहीं कर सकती थी, वैसे characters मिलते थे मुझे. Challenging, because that time मैं almost 2 की 3 पिक्चर्स डाउन साउथ की और एक हिंदी पिक्चर मैंने डबल डुअल रोल किया था उस जमाने में 90s में. So, and Hmm. yes, it was beautiful opportunities where totally the directors, the writers believed in me, trusted in me that I can do my good, give back what Hmm. they are imagining the characters. और वो मैं किया है और मुझे opportunities भी ऐसे मिलते गए हैं करने के लिए. In the span of, how you have pointed out right now, in that span of 3-4 years, I have finished, yes, 33 movies, 32 movies. अभी भी कर सकती हूँ मैं वो. Right. वो तो अच्छी बात होगी फिर तो. आप So काम. you always, so you हाँ always जी. did you always plan to become an actor?
You always wanted to become an actor? No, I have never thought I wanted to become an actor. I was a classical dancer. I used to, we Okay. used to, my sister and we both used to, बचपन से हम लोग क्लासिकल डांस सीखते आ रही है. Hmm. नो, जब दीदी शुरू किया था एक्टिंग में, फिर मुझे भी शौक लग गई, तो और मैं भी आ गई. बस, नहीं तो आई अच्छा. एक्चुअली वांटेड टू बिकम अ लॉयर. लॉयर वाज माय फोर्टे. So, when you decided to quit films, you were, at the top of your game. Like, people were saying that you were the rising star at that moment. So, it was very shocking for people when you left the industry. So, I would like to know, like, what led you to do that? Because you could have done anything. Like, you could have, taken your career or graph to anywhere, to any level. So, what happened? प्यार में पड़ गई थी. Okay. इश्क में पड़ गई थी. Yes, I was in love with the person I got married. And yes, and I truly believed, again, I truly believed in whatever I do, I would love to do my 1000%. So जब शादी किया था, शादी की थी मैं, तब मुझे लगा, मुझे वो जो एक पहली स्टेप मैंने लिया था, उसमें मुझे उसमें 100%, 1000% देना चाहती थी मैं. तो वो Mhm. किया था, वो कैरेक्टर निभा रही थी उस टाइम में. इसके लिए मुझे एक स्टेप पीछे लेना पड़ा था इसमें से. और Okay. कुछ बात नहीं था. बट दे आर ऑल्सो फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, सो देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शंस फॉर मी दैट शादी किया, बिकॉज यूजुअली 90s में ये बहुत होते थे उस टाइम में. Hmm. शादी किया तो Hmm. फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग नहीं करना चाहिए, ये है वो है. बट Hmm. आई वाज टोटली नो, मेरा इसमें वो नहीं था. वो totally it was my decision which I have taken, that after marriage I don't want to, it's not that I don't want to, I want to take a step back and give my 1000% in whatever I'm doing it. Like वैसा, वैसे कोई भी बात नहीं है, कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं. लोग ने किया है, बहुत आर्टिस्ट लोग ने किया है, शादी करने के बाद भी वो लोग एक्टिंग करते थे. इट्स नॉट दैट. बट मैं ये टोटली मेरा डिसीजन था, दैट मुझे एक स्टेप Hmm. बैक लेके मुझे ये करना चाहती हूँ. लाइक नहीं तो अपने इंडस्ट्री का टाइम टाइम का शेड्यूल्स नहीं रहते हैं. सुबह जाओ, शाम को हो आउट ऑफ टाउन, और शूटिंग्स आउटडोर में है. सो इट वाज लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू गो ऑन. सो देन देर इज, ये नहीं है दैट शादी किया और वापस शूटिंग में जा रहे हैं एक्टिंग करने. तो वो आई वॉज नॉट कन्विंस एज अ पर्सन. So whatever I do, I wanted to give my best. So that is what I took a step back and I gave my best for my family life. And I'm still doing it. And now I think I should come back where I belong to. So I have come back. Yes. So how were you so sure about getting married and starting a family? Because most of the people वो मतलब श्योर नहीं रहते अपने लाइफ के बारे में कि उनको क्या करना है. तो आप तभी काफी यंग भी थे. आई गेस 23 में आई गेस यू गॉट मैरिड, राइट? Yeah, 23, 24. Yeah. Yeah, 23, 20. So it was since you were very young. So how were you so sure about it? Like कि मैं अब About what? इसमें about getting married first, leaving your career, then getting married and starting a family, because it's a very Yeah. it's a huge decision in life. Yeah, why are you not sure about what you want to do? जब हम लोग एक कैरेक्टर सुनते हैं, कैरेक्टर पिक्चर करना चाहते हैं, you Hmm. are sure that I want to do this, right? That character, Exactly. how you will place the character, आप में इतना कॉन्फिडेंट है, इसीलिए तो करते हैं. आप वो हाँ बोलते हैं वो कैरेक्टर करने के लिए. वैसे ही है शादी. और शादी एक एक पूरा दिल से होता है. सही है. हाँ, और Hmm. अपना हाथ में है वो कैसा, कितना हद तक उसको निभाना चाहते हो हम लोग. हमारा हाथ में बिल्कुल. है, वो तोड़ना चाहते हो तो नहीं तोड़ना चाहते हो, और साथ में जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो. So I बिल्कुल. was sure in what I want to do. So and Hmm. I told you whatever I do, I give my best in that. So I gave my best of 1000% in that. उसमें 1000, 100 ये नहीं है, but एक example मैं दे रही हूँ आपको. But yes, Hmm. whatever I do, I try to do my best in that. Yes. And I do believe in myself, and I Hmm. do believe in my partner.
That is why we had this rapport, and we have two beautiful sons. मेरे दो बच्चे हैं, दो, एक 27 years की है और एक 24 years की है. दो बेटे हैं मेरा. और अभी भी मैं वही परिवार में अभी भी मैं बहू बन के रह रही हूँ उसके 30 साल के बाद. 92 में मेरा शादी हुआ है और वही परिवार में अभी तक मैं हूँ. Nice. This is Yes. so. Was it after Siddharth's death? It must have been very difficult for you to carry on and raise your children as single mother. So वो आपने कैसे मैनेज किया फिर? I tell you, I'm a very fighter. I take everything as challenge in me. वो actually बहुत बहुत तकलीफ हुआ था मुझे उसमें से बाहर आने में, बिकॉज आई वॉज टोटली अगर आप देखेंगे तो मुझे आपने कहीं भी देखा नहीं होगा, मेरा पिक्चर्स कहीं भी देखा नहीं होंगे, कहीं भी मैं बाहर आई थी, बिकॉज आई बिकेम टोटली अ फैमिली ओरिएंटेड गर्ल काइंड ऑफ अ थिंग, यू नो. सो उसमें से मुझे बाहर आने में मुझे बहुत तकलीफ हुआ था और बहुत साल हुआ था, एक 2 साल, 2-3 साल से ज्यादा हो गया था. बट फिर बाद में मैंने जब मेरे बच्चे को देख रही थी तब मुझे बहुत दुख होता था, क्योंकि वो मेरे बच्चे सिर्फ एक 10 साल का था और एक 4.5 साल का था. तो मुझे बहुत दुख होती थी जब मैं उनको देखती थी. So they don't deserve what they were going through by losing one parent and seeing another parent in another way, this way, like totally into depression and all, you know. So I made myself, I said, no, this is not the one I should be. And this is not what I should give them, because they don't deserve what they are seeing. So again, I worked on myself. Again, I took it as a challenge on me. I said, no, I have to give them the best. And then I worked on it and I came out of it. Yes. And yes, without उन दोनों के मदद से मैं नहीं कर सकती थी. दोनों मेरे बच्चे के मदद से मैं नहीं कर सकती थी, और मेरे परिवार के तरफ से मेरे माँ, मेरा भाई, मेरा बहन, और इस साइड मेरा मदर इन लॉ, everybody, without them I would have not able to won what I have done right now. This is very inspirational. And it's always good, जब कोई ऐसे सपोर्ट करता है तो अच्छा लगता है. When you have somebody to सपोर्ट एक हद तक कर सकते हैं सब लोग, बट बाद में अपने ऊपर है जितना तक आपको आगे लेके जाना है. अगर बाहर से वो लोग जितना भी सपोर्ट करे और दिल से आपको करना नहीं है, फिर सपोर्ट करके वो सपोर्ट लेके भी कुछ फायदा नहीं है. So it is like both in hand and gloves, so you need to, if you are mentally want to do that, and then people will give you support. If you don't want to do, and if you getting support, then there is no point. No, what is the point of them giving support? You're disappointing them also. मदद मिल रहे और आप लेना नहीं चाहते हो. वो दिल से जो भी काम दिल से करना चाहिए और आना चाहिए. I truly believe in that. बिल्कुल. Yes. और तो जब ये सब जब हो रहा था, when you were fighting all this, तो इंडस्ट्री के कुछ लोग, since you have worked in almost 30-40 films at that time, तो कुछ इंडस्ट्री के लोग कुछ हेल्प करने आए, या फिर were you in touch with them? No. Help in what way? Help in what way? Condolence? Yes, there were a lot of condolence. But no, nobody. First of all, the industry never knew where I exist, whether I'm in Bombay based or in Chennai based. वही एक बड़ी industry में बहुत अभी भी मेरा वो football चल रहा है. So no, I have not got any. No, I just got some condolence from few people. That's it. That's it. Okay. So, or I have not reached out. Even I have not reached out, because it's totally my cup of tea. So it is for me to handle my thing. I don't want to go and knock and ask anybody anything. That's great. So, recently, you spoke about Akshay Kumar, that he made fun of your skin tone at that time. So, was
was this kind of the same kind of situations arise when you're working, be it in Bollywood or South, from other industry people? Like All the that. industry has it. It is not only Akshay Kumar. All the industry has this. The Hmm, Indian cinema has this kind of attitude. It is not that. hmm, But yes, in the 90s ये बहुत ज़्यादा होते थे, बहुत ज़्यादा होते थे hmm, 90s में, hmm, because now the phase of natural thing has come out. Like जो hmm, जैसा है वैसा ही, like little bit you do it and then you go however you are. Like everybody's paparazzi is everywhere, so they click you as an everything, because बिगिनिंग्स में 90s में ये नहीं होते थे. बाहर hmm, कहीं भी जाना है तो विदाउट मेकअप वी नेवर यूज्ड टू गो, वी डोंट नीड टू hmm, मीट, एंड इतना मिलना जुलना भी नहीं होते थे. वे काम, काम का मतलब फिर घर, इवेंट से hmm, मुहूर्त है, यही है बस, ओपनिंग से ओनली दैट मच. इट वाज नेवर, इट वाज नॉट, द इंडस्ट्री वाज नॉट सो वास्ट. द इंडस्ट्री hmm, वाज वास्ट, sorry, I want to take back my word. Industry was vast, but hmm, the media, the coverage was not so much. The output hmm, was not so much. I think I'm using the right words. I don't know. It was not so much. मतलब काम का काम, मतलब जब एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है उसका मुहूर्त होता था, फिर हम लोग hmm, मुहूर्त में सब हीरोइन, whoever the actor, actors, producer, directors, music directors होते थे, and the hmm, journalists used to come. Couple of friends used to come from the other productions and everything. We used to have a hmm, muhूर्त shot and then go for the work, come back, and शूटिंग खत्म हो जाते, घर पे चले जाते. आफ्टर पार्टीज होते थे, शूटिंग का लॉन्च मतलब रिलीज का डे, बस दैट्स ऑल. hmm, कैसेट, रिकॉर्ड प्लेयर्स रिलीज होते थे, टेप्स रिलीज होते थे, उसका एक छोटा सा पार्टी हो जाता था, बस दैट्स ऑल. hmm. अदरवाइज nobody, there was no much interaction. इतना एक्सपोज नहीं था इंडस्ट्री, इतना एक्सपोज नहीं था इंडस्ट्री दैट टाइम. आई एम टॉकिंग अबाउट द 90s at least. Hmm. Yeah. So, तो अभी वो डिफरेंस है? Like, are you able to connect with people now? Because अभी Connect with recently, people, connect in the with people. industry. Hmm. I'm trying to connect, but from the सामने से, if they connect, then I talk to them. अच्छा, ओके. सो आपको याद है जब आपने मतलब पहले इंडस्ट्री में व्हेन यू एंटर्ड द इंडस्ट्री, डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट पे एंड व्हाट डिड यू डू विद इट? आपने कैसे स्पेंड First किया? pay. Oh my हम्म, God, my first pay. I don't know. I don't remember what I did with my first pay. No, I think we just put it in the bank. My mom must have opened an account and she must have put it in the bank, and it was all family that time. Yes, she must have saved, preserved हम्म, my money. That's it. I don't know, because कभी कब मांगा तो कभी कम नहीं हुआ था. जो भी मांगते थे मिल हम्म, जाते थे. सो वो मेरे पैसे आते थे कि दीदी के पैसे आते थे कि मम्मी का पैसे आते थे, वो फर्क नहीं होता था उस जमाने में. अच्छा, 90s में हमारा सब एक ही फैमिली का होता था हमारा. So I अच्छा, don't know. There was no differentiate like your pay, my pay. It was all family. That's all. अच्छा, बस दे दो, चाहिए तो ले लेंगे, ठीक है. हाँ जी, हाँ. ऐसे ही. अगर ये हाँ, चाहिए तो मिल जाता था, नया गाड़ी चाहिए नया गाड़ी मिल जाता था. हमको हॉलीडे में इधर जाना था, लेके जाते थे मम्मी. और हमको ये सीखना था तो सिखा देते थे. सो इट वाज ऑल, इधर जाना है डिनर पे, लंच में बाहर जाना है, लेके जाते थे. सो इट यूज्ड टू बी अ फैमिली टाइम, यू नो, इट यूज्ड टू बी ऑल फैमिली. Now it has become like Abhi, if example, if any of my friends, kids, or anybody, they work, they earn. It is not the sharing or it's a family or nothing. It is that the kids tell the parents, which I have seen. The kids tell the parents, "Okay, I got my first pay. I want to get my mom a gift." That's all. It was never a family money. That's all. It goes in her or his account. It is not a family account or no excess. So it is like, it's times changed. Times changed. right. Times have changed. Yes. So, you have worked across languages in the industry. So, would you like to share the difference? Like, what difference you feel working in across languages in different with different people?
Yeah, actually, frankly speaking, I would like to share one thing is I am so blessed with me doing in so many languages, Telugu, Tamil, Right. Kannada, and Hindi. Four languages I have done. But all the four languages, the directors, the actors, and the production house, everybody was so disciplined where I come across the actors, everybody, every technician, everybody was so disciplined. So I have not known the difference when y'all are putting this question. मुझे खुद को मालूम नहीं है क्या डिफरेंस था काम साउथ में और हिंदी इंडस्ट्री में ये मुझे मुझे खुद को मैं एक्सपीरियंस किया नहीं है क्योंकि मैं इतने लोग से काम किया है और इतना चार डिफरेंट लैंग्वेजेस किए मुझे सब लोग इतना डिसिप्लिन ही मिला है जैसा साउथ में डिसिप्लिन होते थे नॉर्थ का भी वैसे ही होता था हिंदी इंडस्ट्री का भी वैसे ही होता लाइक अक्षय यूटे डड्डू जी राज सिप्पी को आप लेके देखिए सलीम अख्तर को देखिए मिथुन जी ऑल्सो यूज टू कम ऑन टाइम एंड कृष्णमूर्ति जी केसी बोकरिया एवरीबडी ईच अशोक गायकवाड whom I worked with everybody was 9 o'clock shift we used to report by 8:45 8:30 we used to report this is the time we used to have so I have never come across that even now Okay. even ott which I have done Dharavi Bank same Samit ji on time Samit Thakkar the director Sunil Shetty on time so I still not come across that difference you know so I really don't know what is that it was fabulous for me Yeah, it's a very nice thing. So, yeah I'm blessed like that yeah, it's kind of, very lucky to, meet right kind of people. exactly yes It absolutely makes your, and fingers crossed I hope yeah. I get more and more like that What is your best and worst memory while working across industry? Would you like to share there is no the worst best? Okay, the best one. the best You can share multiple memories if you have. multiple okay Yeah. ओके मल्टीपल तो है ही नहीं है बिकॉज उस जमाने में 90s में हम लोग सिर्फ काम करते थे निकल जाते थे बस देयर वाज नो मच इंटरेक्शन विद एनीबॉडी इन द 90s frankly speaking there's no much interaction yeah but one incident I would like to tell is एक बार हम लोग ऊटी में शूटिंग करते फूल और अंगार के टाइम मैं जब करती थी विद मिथुन जी मिथुन जी का शूटिंग खत्म हो गया वो चले गए हैं एंड आई वाज continuing for another project also down south project and I was so thrilled that Sridevi was there Sridevi ji was there and I was so thrilled I have never met her personally yeah I have never met her personally because that incident I still remember I went, knocked the door, and she was there, and she welcomed with open arms. And beautiful conversation we had. दोनों हम दोनों बैठ के बात किया था उनसे ऊटी में उनका भी कुछ I don't remember which picture she was shooting हिंदी picture के लिए and we just spoke and that is one which I always looked upon her you know she's one of the beautiful actors beautifully carried all the characters all the looks on her glamour ho Indian ho whatever Maito ho she carried beautifully so I always liked her so yes when I had an when I had an opportunity उनको मिलना so I went ahead and I because 90s में कोई किसी से बात नहीं करते थे and I went to her hotel room I knocked her door she I mean of course उनका असिस्टेंट जो भी है उन्होंने बताया था उनको that she's come to meet you and she welcomed with open arms that was beauty of her she has not told that मैं busy हूँ मैं बाद में मिलूंगी ये टाइम पे आने के लिए वो टाइम nothing she just opened and I just went into her room we just had we just spoke each other we both shared couple of things and that's it yes this is one beautiful incident I can tell Yeah, it's very beautiful memory you have. yeah and in spite of
people that time in the 90s when I did, even my sister was there, Bhanupriya was also there. That time it was a big tough competition was going on because she was also doing Hindi and they were writing lot of news coming out like Sridevi, Jayaji, Bhanupriya, Vijay Shanti. So many names were popping up. No, down south, they both competition chal rahe, aa rahe, you know. But in spite of that, also she never took as a okay, Bhanupriya, sister, Shanti Priya, she wants to meet. No, nothing. She welcomed beautiful. That's one beautiful incident I would like to share. Yes. And how did you see the competition? Like, did you see any kind of competition between all these actresses, or yeah, Between, आपने काम between the between, actresses? Yeah, no. They were not. We were used to do our we used to be our own competition. Like और कितना कर सकते हैं और कितना पिक्चर्स करेंगे. It was like that, you know, busy और कितना होंगे हम लोग. It was like that. We never had time for our personal life actually. If you see in the 90s, we used to do more and more and more and more in pictures. Like आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हो. फैमिली लाइफ, हॉलीडे, फिर एक प्रोजेक्ट, वैसा हम लोग उस टाइम में वो नहीं करते थे. पिक्चर के बाद ये पिक्चर हो गया, अदर पिक्चर, इट वाज लाइक दैट, यू नो. इट यूज्ड टू बी लाइक दैट. वी नेवर यूज्ड टू हैव रीडिंग्स, स्क्रिप्ट रीडिंग्स और वर्कशॉप्स, वो नहीं होते थे हमारे. सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस. तो अभी जब आप काम कर रहे हो, नाउ देयर आर लॉट ऑफ फैसिलिटीज, वैनिटी वैन्स हैं, अच्छे सेट्स हैं, देयर आर काफी डिफरेंस है, यू नो. अभी वैनिटी वैन्स है, काफी अच्छे सेट्स हैं, देन टेक्नोलॉजी है. तो कुछ डिफिकल्टीज आ रही है या यू आर लाइक प्रीटी ओके विद इट? वैनिटी वैन तभी भी थे, 90s में भी थे वैनिटी वैन्स. That time also we had vanity vans. Only in certain places, थोड़ा विलेजेस में सब जहां वैनिटी वैन नहीं आ सकते हैं, उस टाइम में तकलीफ होती है. नहीं है तो we had vanity vans. Yeah, technology has changed a lot. Even working wise have changed a lot. You get prep, you get bounded scripts, you have workshops for dance, acting, for the character thing. Look test होते थे. We never had all these facilities. Look test नहीं होते थे, script bound scripts नहीं मिलते थे, prep नहीं मिलते थे, dancing के song का practice नहीं होते थे, acting का scripting, table reading जो बोलते हैं आजकल नहीं होते थे. We never had all this. Lot of changes, but it is good, nice, time saving. Before you, yeah, time saving before you go on the set. But इसका मतलब ये नहीं है हम लोग उस टाइम नहीं कर पाते थे, हम लोग भी करते थे. On the set the director used to tell us 1-2 shots, हम लोग करते थे, try करते थे, practice करते थे on the right. आप एक बार कर लो, मेरा एक बार lines हम लोग practice कर लेते थे, and then we used to go for the shot. And max to max, एक shot, 1 take or 2 takes. Everybody was okay with that. So even dance we used to do like that. On the spot we used to do dance. Okay. और आपका अप्रोच कैसे होता था? Like how you used to approach roles, or how would you say yes to films? Okay. No, I never got. I mean, it is like one project the other. They used to get just approach. The director used to call, or the production used to call. The producer. Production means the producer used to call that, ma'am, we are doing with this director, with this hero, and then if you are interested, then we would like to narrate the story and your character. Then we used to say yes. Then they used to get the story, my character, then हाँ बोला तो then we used to go ahead. That's all. Nothing else in between. अच्छा. It's a तो simple. कभी ऐसे नहीं कि हाँ, तो ऐसे नहीं कि ये डायरेक्टर है तो नहीं इसके साथ नहीं करना, या फिर ये एक्टर है तो नहीं, मैंने बहुत मेरे डायरेक्टर्स, हीरोज, प्रोड्यूसर्स के साथ बहुत रिपीट किया है. और रैपो वाज वेरी गुड. नहीं, मेरा कभी हुआ नहीं है ऐसा. और मेरा कैरेक्टर्स भी इतनी अच्छी आई है मेरे साथ. सो मैंने हाँ सब का मैंने हाँ बोला था. And they were beautifully, it is not that repeated characters also, they were beautiful characters, whatever I have played. In all the languages. तो वो मैनेज करना कितना डिफिकल्ट है? बिकॉज यू हैव टू गेट इनटू वन कैरेक्टर, देन स्विच टू अनदर फॉर अ डिफरेंट फिल्म,
for a That different is project. why we are called actors. Right. That is why we are called actors. And it is a plus point for me, or anybody might agree with this. Being a dancer, it is very easy. Being a dancer, it is very easy for us to switch from one character to the other character. But actually, आप दिल से करते हो जो भी करना चाहते हो. So it is not difficult. That is why we are able to act Oh, from one right, character to the other. right. Now in life also, in your personal life also, you have switched to different characters. So how was your approach in life? It was tough for me. It was tough Hmm. because this is my personal life on stage. It was tough for me. Right, Marriage, wife, then daughter-in-law, right. फिर माँ, बहुत. Mother. बट ये सब पर्सनल लाइफ है. सो टफ था मुझे. भाषा समझने में, मराठी बंगाली समझने में भी तकलीफ हुआ था मुझे, बीइंग अ Hmm. साउथ इंडियन. तो उनका कल्चर मुझे सीखने में तकलीफ हुआ था. सो ग्रेजुअली ग्रेजुअली मैं सीखते गई. सो Hmm. यस. So तो आप अगर if you want to go back in time, what would you like to change in your life? गो बैक इन टाइम. Go back in ओ time. माय गॉड. मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर गो बैक इन टाइम, शांति तू और रुक सकती थी शादी करने के लिए. और थोड़ा काम करने के बाद कर सकती थी शादी. इतना जल्दी क्यों थी शादी करने में. बस वो थोड़ा चेंज कर सकती थी. करना अच्छा. चाहती हूँ, बट मैं Hmm. रिपेंड नहीं करती हूँ. बट करना अगर होता था करती. होता था तो क्या थे. Okay. So अभी तो now you're making a comeback into on the big screen. So now what is the way forward? Like have you planned everything या फिर आप बस एंजॉय करना चाहते हो, काम करना No, चाहते हो no, no, then no, no, no. I am totally full-fledged. I am planned my thing. I'm not come to do enjoy or masti. 2 साल किया, वापस चले गए, वापस 3 साल में बाद में आया. No, I have come back exactly where I belong to, first of all. एंड सेकेंड थिंग, बहुत मैंने आराम कर दिया है, तो आगे मुझे आराम नहीं करना है. एंड मुझे ये एक ही बोलना है, लाइक आई वांट टू बी बिजी the whole 365 days and 24/7. I should not have that much time for myself also, where I am so busy. This is what I want to. People say तू पागल हो गई क्या? नहीं, मैं पागल नहीं हुआ. मैं बराबर सोच के मैं बोल रही हूँ, मेरे को जो करना है यही करना है मुझे. बहुत बहुत मैंने ये कर दिया. यस. अच्छा. Nice. It's a very यस. nice thing. Thank you so much Shanti Priya जी. थैंक यू प्रमोद. थैंक यू वेरी मच. ब्यूटिफुल. थैंक यू. It was very nice talking to you. See थैंक you यू. soon.